Hello and welcome all of you in this episode number 4 of my Finance Act 2020 Amendment series. First of all, I wish to thank each one of you who are seeing my channel, who are seeing my video and following me regularly and asking me to upload more and more videos. Thank you so much. ये motivation continue रखे तो मैं आपको बहुत सारा content, बहुत सारा videos मैं आपको बनाते रहूँगा आपके लिए and you will be definitely feeling very good. Tax updates से regarding whatever you want, you can just message me, you can just comment in any video of my channel and I'll be happy to share that update with you as fast as possible. Today's episode number 4 of Finance Act 2020 Amendment series is all about tax audit reports. As you all know that section 44AB talks about tax audit report filing, which has to be done by every taxpayer whose turnover exceeds, in case of business, 1 crore, in case of profession 50 lakhs during a financial year. And there are many other businesses who are required to file tax audit reports. So there is a very significant amendment which has come in section 44AB Vide Finance Act 2020, which is already applicable this year. So I think you should not miss on this amendment. So kindly listen to this video very nicely. Last tak dekhna, and please do not forget to subscribe to my channel if you want to regularly get the update. Okay, my name of the channel is CA Nikunj Goenka Tax Mentor, and you can just go to YouTube and you can just subscribe to my channel as the earliest. So the amendment is very simple. The amendment is basically for the person who is engaged in business. जैसे आपको याद दिख रहा होगा, जो person business में engage होते हैं, जो business में engage होते हैं, उनका turnover 1 crore अगर cross करता है तो they have to get their tax audit done, right, under section 44AB, which is basically form 3C and form 3CD. राइट सो उनको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है जिनका टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़. नाउ द चेंज इज हियर इन दिस सेक्शन. ओके, द चेंज इज बेसिकली for a specified class of taxpayers who majorly do their transactions online other than cash mode. अगर उनका majorly transactions other than cash mode रहता है, so in that case that turnover limit has been increased to 5 crores. In a specified case the tax audit limit will be increased to 5 crores. यानी अगर आपका turnover 5 crore क्रॉस करेगा तब जाके आपको tax audit कराना पड़ेगा, but only for some specified cases, and that specified cases is basically for those businesses who majorly does their transactions in online mode, right? They do not do transactions in cash mode. अब से सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर टोटल रिसीट में से जो वॉट एवर दे हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, not more than 5% is in cash mode. Not more than 5% of the total amount received is in cash mode. And total amount of payments made, I repeat, total amounts of payment made, not more than 5% of the total amounts of payment made is in cash mode. So I'll again repeat, up to 5% of the total amount received and up to 5% of the total amount paid is in कैश मोड. नॉट मोर देन 5% इज इन कैश मोड. उससे ज्यादा अगर कैश में आपने रिसीव किया है या कैश पेमेंट किया है, दोनों में से कुछ भी, सो योर लिमिट विल नॉट बी 5 crores, योर लिमिट विल बी 1 crore. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू बूस्ट ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट हैज गिवन एन इंसेंटिव फॉर दोज बिजनेसेस जिनका टैक्स ऑडिट लिमिट 5 crore का लिमिट होगा. Only in 2 cases where their payment amount 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता कैश में, टोटल का 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता कैश में, एंड साथ ही साथ कैश रिसीट शुड ऑल्सो नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज रिसीव्ड. ओके, तो कैश रिसीट भी देखना पड़ेगा और कैश पेमेंट भी देखना पड़ेगा. 5% का लिमिट है. सो दिस इज नंबर 1 अमेंडमेंट इन सेक्शन 44AB. ओनली इन दोज केसेस दैट लिमिट विल बी 5 crores, else the limit will be 1 crore. And the second important change is due date of filing this tax audit report. Normally we know that tax audit report कब जाता है? Tax audit report goes along with filing return of income under section 139(1). You have a specified due date to file return of income, either it is 31st July or it is 31st October. ये भी amend हो चुका है, पहले 30th September था, अब ये हो गया 31st October. This also I will come upon in my next video. And a specified due date is also 30th November. Now पहले क्या होता था कि tax audit report has to be filed along with the return of income. Like you file your return of income and you file your tax audit report together.
right? Like due date of return filing, due date of tax audit report is due date of return of income. It is same date hota tha. Now pursuant to Finance Act 2020 amendment, the due date of filing tax audit report is at least 1 month, I repeat, is at least 1 month prior to the due date of filing return of income. मतलब whatever your case may be, whatever your due date is for return of income, you have to file your tax audit report 1 month prior to the due date of filing return of income. Say for example, your due date of filing return of income is 31st of October, say for example, then your tax audit report due date is 30th of September. यानी 31st October के एक महीना पहले हो गया 30 September. If your return filing due date is 30th November, your tax audit report due date is 1 month prior to the due date of filing return, that is 31st of October. So 1 month का gap हो गया between your tax audit report and this is return of income. So this is basically done to ease the compliance burden on the taxpayer कि एक ही साथ उन्हें रिटर्न का भी प्रेशर आ जाता है, टैक्स ऑडिट का भी प्रेशर आ जाता है. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिटर्न का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया. फॉर ऑडिट एसएससीज वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और टैक्स ऑडिट का जो टाइम लिमिट है दैट हैज बीन बेसिकली प्रीपोन्ड एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. सो 1 मंथ का टाइम यू विल बी गेटिंग आफ्टर योर फ्रीजिंग योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. देन यू हैव 1 मंथ टू फाइल योर tax returns. Okay, so these are the two major amendments which is there in section 44AB. So मैं आपको quickly एक बार फिर से याद दिखा देता हूँ. एक brief write up है. Filing of tax audit reports, quickly एक बार देख लो. Filing of tax audit reports, section 44AB, increase in threshold limit in specified cases. Every person carrying on business and his total sales turnover gross receipts, if it exceeds 1 crore, he is liable to get his accounts audited by an accountant. ये हमें पता है. But अभी this threshold limit is increased to 5 crores. This threshold limit is increased to 5 crores for a person whose aggregate of all the amounts received, including amount received for sales, turnover or gross receipts during the previous year in cash, does not exceed 5% of the said amount. यानी कैश वाला जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट का 5% से बेसी एक्सीड नहीं कर रहा. ठीक है, 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा. मतलब अगर 100 लाख टोटल रिसीव किया है तो उसका 5 लाख से बेसी कैश नहीं होना चाहिए. 5 लाख से बेसी कैश नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम 5 लाख अलाउड. And you also need to check payment side. Aggregate of all the payments made, including amount incurred for expenditure in cash during the year, does not exceed 5% of the payment. Similarly, अगर आपका मान लो 50 lakhs का पेमेंट भी है, अगर आपका 50 lakhs का पेमेंट भी है तो 2.5 lakhs से ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा योर कैश पेमेंट शुड नॉट बी देयर. मतलब बाद बाकी जो भी होगा या तो अकाउंट पे चेक या तो ऑनलाइन नेट एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई मोड, व्हाटएवर, बैंक अकाउंट ट्रांसफर, व्हाटएवर मोड यू डू, बट कैश मोड नहीं होना चाहिए. ओनली इन दैट केस योर ऑडिट लिमिट विल इंक्रीज टू 5 crores. एंड देन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज 1 month prior to the due date of filing return of income, and that will be different for different SSEs, right? Either it is 31st October or it is 30th November. So 1 month prior to, accordingly you will calculate, and that will be the due date of filing of tax audit report, which is not same as due date of filing return of income. It is 1 month prior to the date of filing return of income. So guys, thank you so much for giving your for showing your love and for giving me 100% confidence कि सर आपने मतलब मेरे अमेंडमेंट वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया. एंड इसी तरीके से बस मैं और आपके सामने अमेंडमेंट वीडियो शेयर करता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे. थोड़ा क्लासेस भी चलता है डेली बेसिस पे. सो गाइज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मे बी कोई एक दिन स्किप हो गया तो प्लीज़ बुरा मत मानना. चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. आपको डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं एटलीस्ट 4 या 5 टाइम्स अ वीक यू विल बी गेटिंग दिस फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडमेंट वीडियोज़. जब तक ये सीरीज़ खत्म ना हो जाए तब तक बने रहिए. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना भूलना मत. सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको रियल टाइम बेसिस पे हम अपडेट्स पहुंचा सके. तो सेक्शन 44AB का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं. आज का एपिसोड नंबर 4 हम यही समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर.